बच गए, बच गए, बाप रे बाप, बच गए. One of the worst perform one of the worst नहीं, sorry, this was the worst performance of the season for Arsenal and against the worst side in the Premier League. और मेरे को and I feel genuinely कि this is the worst Wolves or worst Premier League team I have seen. और उसके सामने Arsenal, who are top of the table, who are supposed to be the best in Europe, had the worst performance. बच गए भाई, जीत गए 2-1. एक मतलब जब गोल लगा था तो मेरे को लगा जीसस हैज रिजन एंड क्रिसमस टाइम है तो व्हाट अ कमबैक, बट अपेरेंटली टर्न आउट टू बी एन ओन गोल. बहुत जल्दी हुआ था. बट दिस वाज दिस वाज सो बैड मैन. मतलब मैं क्या ही बोलूँ. एक तो रात को 1:30 बजे उठ के मैच देखो, इंडियन टाइम के हिसाब से, एंड यू व्हेन यू वाचिंग द मैच you see your team passively moving forward. Wolves side who was bottom of the table and unexpected from that, from Wolves की वो लोग ना लो ब्लॉक खेलेंगे. तुमको पता है लो ब्लॉक खेलेंगे. दे आर कमिंग टू द एमिरेट्स. एमिरेट्स पे मेजोरिटी टीम्स आके लो ब्लॉक खेलती है. अरे सिटी लो ब्लॉक खेल के चली गई यार. तो तुमको पता होना चाहिए लो ब्लॉक खेलने से. यू what is the team doing other than Saka? एंड आई वुड इवन से बेन वाइट, जो आई थिंक 24th या 25th मिनट तक ही वॉज ऑन द पिच. नहीं नहीं नहीं, या ही वॉज आई थिंक 28th मिनट तक ही वॉज ऑन द पिच. उसके बाद आई सॉ साका एंड बेन वाइट आई थिंक टिम्बर से बेटर राइट बैक खेल रहा था when it came to the overlaps. I have not seen Timber make so many overlaps, but Saka got a lot of support because of Ben White making those overlaps. And few passes were very good from both of them and they were trying, but Gyökeres की positioning पता नहीं क्या है. I think Gyökeres is not trusting. Uh, then Gyökeres is not trusting them कि वो लोग राइट जगह पास करेंगे. What he's not taking chances, I don't know. मतलब क्या चल रहा है अभी भी. They are not in tune. मेरिनो, हैवर्ट्स, जीसस खेलते हैं, जेसूस खेलते हैं, तो it's completely different. But अभी इसके साथ it is, he's still not in. He just had one shot which was scuffed and it went wide. Gave a couple of chances. साका ने एक बॉल अक्रॉस द गोल मारा था. ग्योकेरेस was not in position that he could tap it in. सेकेंड चांस मैं ग्योकेरेस की गलती नहीं, बिकॉज आई सॉ इट इन द रीप्ले. पहले मेरे को लगा व्हाट द हेल इज ग्योकेरेस डूइंग. ही कुड नॉट इवन get to the end of it when Martinelli made a run into the box. I saw it in the replay from a different angle. Martinelli as usual नीचे देख के दौड़ रहा है. He is not even looking मेरे आजू बाजू कौन है. And one point when he looks up is when he gets close to the goal. वो सीधा गोल की तरफ ही देख रहा है. He's looking at the far corner. He's going for the far corner. He did not even notice that Gyökeres भी मेरे साथ आ रहा है. I can just put a nice ball towards Gyökeres, probably in that direction. He can, or him or some other player can probably put it in. But ठीक है अभी यार. I am not going to complain much about what Gyökeres is doing or what Gyökeres is getting as a service. Overall, this game was piss poor. That goal by Wolves, understand the entire context of that goal. हम लोगों ने, we allowed Wolves to have 72% possession in the last 10 minutes before that goal. क्या कर रहे हो? Why? पूरा गेम Wolves were struggling to attack us. Only thing that I think दो chances उनके बने थे, all because on a counter attack, and players looked tired. They could not track back. वो that uh, the Asian player Wolves का, जिसको इसका पेप को भी नाम नहीं याद आता, मेरे को भी याद नहीं आता. I think I understand Pep now why he couldn't remember the name. So, anyways, so he got a good chance in the first half. I think that was the only on-target shot in the first half. And Arsenal का तो कितना टाइम लगा. It took a Rice shot from outside the box. वो भी एकदम ही out of the blue मारा उसने, तो जाके हमारा ऑन टारगेट शॉट लगा. मैं आई डोंट नो, मतलब यार इतना गंदा परफॉर्मेंस. मेरे को तो आई वाज, जब उनका वुल्स का गोल गया ना, इक्वलाइजर, आई वाज, मैं बोला यार क्या कर रही है टीम. लाइक आई सेड द कंटेक्स्ट वाज देयर दैट दे हैड सो मच पोजीशन.
You see that shot, दो चीजें हुई वो shot जब that ball when it came in to the box for that header goal. ओडेगार्ड बाजू में खड़ा वही ने करके मतलब वो क्या क्या कर रहा है ओडे गो लुक एट दैट क्रॉस इन बाय वुल्व्स प्लेयर फॉर दैट असिस्ट फॉर दैट गोल लुक एट हाउ ओडेगार्ड व्हाट इज डूइंग इज वाचिंग खड़ा है वहां पे इज जस्ट स्टैंडिंग देयर he's watching, he's allowing that player to pass that ball. Rice, who's in direct line of that shot, he's trying to duck because he's afraid. I don't know, matlab, theek hai, that's a human reaction, but you are a professional, you're a footballer. You know that ball is going directly on target. You are the best chance to block it. He just ducked out of there. ठीक है एंड देन ऑब्वियसली एन कैपिया स्ट्राइकर के पीछे खड़ा है तो आई डोंट नो मतलब दैट वाज जस्ट एंड दैट स्ट्राइकर वाज टॉल एंड बिग आई थिंक इवन गैब्रियल वुड हैव स्ट्रगल्ड तो हेनकैपिया तो पता नहीं क्या ही कर लेता उसके सामने तो एज सून एज दैट बॉल केम इन दैट वाज सपोज्ड टू बी अ गोल वंस इट लैंडेड ऑन द नियर द स्ट्राइकर वो बहुत ही खराब बट ओनली वन गुड player I like I said who played really well was Saka and Saka created both the goals ओन गोल से जी दोनों ओन गोल थे फर्स्ट बाय द गोल कीपर एंड द अदर बाय नेम आर्सेनल नेम से एक प्लेयर मॉस्केरा यार दैट डिलीवरी बाय साका ऑन द कॉर्नर क्रेजी डिलीवरी आई डोंट नो उनका गोलकीपर क्या ही कर लेता थोड़ा और पीछे जाके शायद टच करके ऊपर कर सकता था बट इट्स लाइक इफ्स एंड बट्स मतलब ही ट्राइड एवरीथिंग एंड अनलकी एज ही कुड गेट ही मतलब आई थिंक द गोलकीपर प्लेड वेल Karus, he didn't have much to do anyways the entire match. Arsenal barely hit the target. And I think the second pass by Saka was also pretty good. मतलब वही है ना कि his deliveries yesterday were on point. He was very direct. He was getting into the box constantly. But यही था कि last passes अगर if I see the ratio of it, he created very good chances. Gyökeres was not at the end of few of them. Uh, or any other Arsenal player were not there. Then there was one chance by Odegaard, I think he got through and usme he could have just looked back. I think it was for the second goal when we were 1-0 up. He could have just looked back and he could have just, put the ball for someone else to tap it in or shoot it in. बट नहीं हमारे भाई साहब को तो एकदम इम्पॉसिबल एंगल से उसको शॉट लेना था वंस ही गॉट दैट एंड ओडेगार्ड हैज बीन वेरी प्लेइंग वेरी पुअरली. But I will not target him today only for. I will only target him for the goal that we conceded because he was standing right there. क्या कर रहा है तू? He's completely forgotten how to press, man. I'm just disappointed overall by the performance, and it's great. It's great that Arteta came out and he said that he is not at all happy with this performance. That's exactly what I wanted to hear, and I wanted to see the players pissed off by their performance. Best thing है for the entire week we do not have any other match जो हम लोग इतने matches खेल रहे हैं constantly. There is no more match, there is no international matches, nothing. The players can take a break for a couple of days, they get back into training and Arteta talks to them. And जो issues हो रहे हैं डिफेंस के अंदर जो issues हो रहे हैं क्रिएटिंग में सब लाइक वो लोग जाके उसको रिजॉल्व करे. ट्राई टू गेट सम मोर केमिस्ट्री विद ग्योकेरेस टू अंडरस्टैंड ये प्लेयर कैसे दौड़ता है. अगर ये हमारी तरह नहीं खेल पा रहा है कैन वी अडेप्ट टू हिम. मतलब these creative players need to understand we have a player who has scored 97 goals in the last 2 seasons और हम उसको create करके नहीं दे पा रहे. Ridiculous. Overall, I think we did like I've always maintained it's in our hands. We have done our job. Best part था Saturday game हो गया. Now it's pressure on Manchester City and Aston Villa. They need to go and win their matches. They know Arsenal have done their job. जैसे भी किया हो रगड़ते रगड़ते हमने हमारा काम कर दिया है. And now we sit back, we open a beer, and we watch City and Villa play their matches and see if they can drop points. But this is not at all a good performance. And as the thumbnail suggests, bach gaye BC. Thank you for watching.